students, welcome to the next lecture of light, reflection and refraction. Here in this lecture, we will discuss about one another important term that is called as magnification, and after that we will discuss about the refraction of light. Next term related to reflection is magnification. What is magnification? Magnification is the ratio of height of the image and the ratio of height of the object. Clear? So the ratio of height of the image and height of object is called as magnification. So what is this? It is ratio of height of the image and height of the object is called as magnification. It's called as magnification. It is denoted by M. This is M is equal to height of image upon height of object. Height of image is h dash and height of object is h. This is also written as m is equal to minus v upon u. The mode of m, when the mode of m is equal to 1, mode means without sign, मतलब m के सामने माइनस या प्लस साइन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है. That's why we are writing here the mode of m. So here, if the mode we have denoted with this sign, if the mode of m is equal to 1, then the height of image is equal to the height of object. So here is image is equal to object, and if the mode of m is less than 1, then the height of image is larger than object. Here image is larger than object, and if the mode of m is smaller than 1, then image is smaller than object. Okay, so this is the magnification. ठीक है, इस मैग्निफिकेशन को हम इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो निकालने के लिए यूज करते हैं. दिस m इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज. m इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज and m is positive for virtual image. Clear? So this is about the magnification. Here the topic reflection is getting completed. Now we have to start a new topic, that is refraction of light. इसी चैप्टर में हमें refraction of light भी देखना है. So we have to start new topic, that is refraction of light. As we know that
Reflection means when the incident ray is incident on the, or when a ray is incident on the reflecting surface, then it reflect in the same path on striking with the mirror. But in case of refraction, what will happen? So here is refraction. What is refraction? Refraction means the change in the direction of light when the light travels from one medium to another, from denser medium to rarer, or from rarer medium to denser. So what is refraction? Refraction means change in the direction of light when it travels from one medium to the another medium. This is called as refraction. Now we have to understand the refraction with the help of a diagram. So here this is a refracting surface and here is one more refracting surface. Clear? When a light ray is incident, suppose in this the light ray is travel from rarer medium to denser medium. Clear? Here is rare medium and here is denser medium, and light travels from rare to denser medium, and here from dense to rarer medium. The example of rare medium is air and denser medium is liquid. Liquid is denser than air and solid is denser than liquid. Here the dense medium is again liquid or water, and here the rare medium is air. So what will happen? The light ray is incident. So this is the incident ray. Clear? This is the incident ray. We have to draw a normal here. So this is the normal. ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे इस तरह से निकलनी चाहिए. ठीक है, एकदम स्ट्रेट इस तरह से जानी चाहिए. लेकिन जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर करेगी, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये लाइट रे इस तरह से सीधी ना जाते हुए नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी. इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. क्लियर? यहां पर एंगल फॉर्मेशन होगा. Here the angle is incidence, angle of incidence, angle between incident ray and normal, and here is angle R, which is angle of refraction, the angle between normal and refracted ray. So this is the incident ray, and this red one is the refracted ray. Okay, so this is the refracted ray. Here the light ray goes from denser medium to rarer medium. This is the denser medium and this is the light ray which is incidented. Here is again a normal. So this is the normal. The light ray normally passes through like this. This is the way of light. But when the light ray enters in the rare medium from denser medium, then it goes away from the normal. Clear? So this goes
away from the normal. Again, this is angle I and this is angle R. The angle between refracted ray and normal, that is called as angle R. This is incident ray, this is refracted ray, and this one is the normal. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, और जब लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर जा रही है. क्लियर? ये क्यों होता है? ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी. जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट गेट्स डिक्रीज्ड. व्हाई दिस फिनोमेना इज हैपनिंग? वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज हियर. क्लियर? और यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी की डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जैसे ही लाइट रे जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो हियर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज. वेलोसिटी ऑफ लाइट increases. Clear? So this is the definition of refraction, that is change in the direction of light when it passes from or it travels from one medium to the another medium. Now we have to discuss about the laws of refraction. Reflection के laws थे, वैसे ही हमारे पास reflection के laws भी है. So here we have to discuss about the laws of refraction. Here is laws of refraction. जैसे हमारे पास टू लॉज रिफ्लेक्शन के थे, वैसे ही टू लॉज रिफ्रैक्शन के भी है. फर्स्ट लॉ तो सेम है दोनों में, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. सो द फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे थी, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे है, एंड normal all lies in the same plane. So this is the first law of refraction. The second law वहां पर क्या था, angle of incidence is always equal to angle of reflection. बट यहां पर ऐसा नहीं है. अभी हमने दोनों डायग्राम देखा, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही थी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइज क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही थी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइज क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था. इट मीन्स ये हमेशा इक्वल नहीं होता है रिफ्लेक्शन की तरह. ये इसका साइज जो है वो चेंज होता है रिफ्रैक्शन में. तो यहां पर क्या होगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of incidence and angle of refraction is a constant. The ratio of sine of angle of incidence and angle of refraction is a constant, and this constant is known as refractive index. See, this is also called as refractive index, and this is denoted with the help of a sign that is called as mu. So here is
mu is equal to sin I upon sin R. This is also called as Snell's law. Okay, so this is the Snell's law. Now the next thing we have to discuss about what is refractive index. Okay, so these are the laws of refraction, and now the refractive index. Refractive index is the property of light by which just a minute, I am writing here. What is refractive index? Refractive index here is refractive index. It is a property of light which tells us the speed of light in a medium. Clear? So this is the property. This is the property which tells us the speed of light in a medium. किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को जिस प्रॉपर्टी से डिनोट किया जाता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एब्सोल्यूट इंडेक्स एंड relative refractive index. So the first one is absolute refractive index. Absolute refractive index is the ratio of velocity of light in vacuum and velocity of light in another medium. Clear? What is absolute refractive index? It is the ratio of speed of light in vacuum and in another medium. So it is ratio of speed of light in vacuum and in another medium. वैक्यूम और उसके साथ कोई भी मीडियम है, वेदर इट इज रेयर मीडियम और इट इज डेंसर मीडियम, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V m. C is the refractive index, or no, C is the velocity of light in vacuum, not refractive index. Refractive index is mu. What is C here? C is the velocity of light in vacuum. Okay? So here is the ratio of स्पीड की जगह हम वेलोसिटी वर्ड यूज करें, ज्यादा क्लियर रहेगा. सो हियर वी हैव टू यूज द वर्ड वेलोसिटी. Okay, so this is the absolute refractive index. The another one is relative refractive index. Second one, relative refractive index. Clear? Relative refractive index is the ratio of velocity of light in two different medium. Clear? What is this? It is the ratio of velocity of light in two
different medium is known as relative refractive इंडेक्स. ठीक है, यदि वैक्यूम और किसी एक मीडियम में हो तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यदि दो मीडियम में हो तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको हम किस तरह से लिखते हैं? म्यू, क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, टू मीडियम आर कंपेयरिंग, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे μ21 and μ12. What is μ21? Speed of light in one medium. Here is μ21 ना, बुक में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, आप इसको 21 नहीं बोलेंगे, इट इज μ21. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ light in medium 1 अपॉन, क्योंकि दो मीडियम को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज v1 अपॉन v2. ठीक है, और यदि इसको हम इस तरह से लिखते हैं μ12, देन speed of light in medium 2 upon speed of light in medium 1. Yeah, here it is written as v2 upon v1. Clear? So this is the comparative study of two mediums. So this is the refractive index of two medium, or the relative refractive index. Here the topic, that is refraction and refractive index, is getting completed. In our next lecture we will discuss about some examples of refraction. Thank you very much.